Hi guys, welcome to our English vocabulary lessons series. In this video we will learn the bedroom objects vocabulary in English and Hindi with example sentences. Bed. Bed means palang. I usually take a bath before going to bed. मैं आमतौर पर सोने से पहले नहाता हूँ. Mattress. Mattress means gadda. You may choose a foam or a featherbed mattress. आप फोम या पंख वाले गद्दे का चयन कर सकते हैं. Bed sheet. Bed sheet means चादर. Please change my bed sheet. कृपया मेरी चादर बदल दें. Pillow. Pillow means तकिया. Please get me a pillow. मुझे एक तकिया दे दें. Alarm clock. Alarm clock means जगाने की घड़ी या अलार्म घड़ी. I've set my alarm clock for 6 tomorrow. मैंने अपनी अलार्म घड़ी कल 6 बजे के लिए सेट कर दी है. Wall clock. Wall clock means दीवार घड़ी. There wasn't a wall clock in the room. कमरे में दीवार घड़ी नहीं थी. Lamp. Lamp means lamp. This lamp gives off a soft light. यह लैंप शीतल प्रकाश देता है. Closet. Closet means अलमारी. I just organized my closet. मैंने अभी अपनी अलमारी व्यवस्थित की है. Desk. Desk means मेज. The desk is made of wood. मेज लकड़ी से बना है. Shelf. Shelf means दराज या अलमारी. He put the book on the shelf. उसने किताब को शेल्फ पर रख दिया. Books. Books means पुस्तकें. I have many books. मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं. Mirror. Mirror means दर्पण या आईना. In the mirror we see the face. आईने में हम चेहरा देखते हैं. Chair. Chair means कुर्सी. A cat was sitting on the chair. कुर्सी पर एक बिल्ली बैठी थी. Curtains. Curtains means पर्दे. He drew the curtain aside. उसने पर्दा एक ओर खींचा. Door.
Door means दरवाजा या द्वार. Open the door, दरवाजा खोलो. Painting. Painting means चित्र या तस्वीर. My daughter made this painting. मेरी बेटी ने यह पेंटिंग बनाई है. Blanket. Blanket means कंबल. The baby was wrapped in a blanket. बच्चे को कंबल में लपेटा गया था. Rug. Rug means गलीचा. We spread the rug out on the floor. हमने गलीचा को फर्श पर फैला दिया. Television. Television means television या चित्रपटल. Television helps us widen our knowledge. टेलीविजन हमें अपने ज्ञान का विस्तार करने में मदद करता है. Flowers. Flowers means फूल या पुष्प. She took the flowers and put them into a vase. उसने फूल लिए और उन्हें एक फूलदान में रख दिया. Air conditioner. Air conditioner means वातानुकूलिक. Can we turn the air conditioner on? क्या हम एयर कंडीशनर को चालू कर सकते हैं? Fan. Fan means पंखा. It's so hot, please turn the fan on. बहुत गर्मी है, कृपया पंखा चालू कर दो. Plant. Plant means पौधा. This plant doesn't need a lot of light. इस पौधे को ज्यादा रोशनी की जरूरत नहीं होती है. If you found this video helpful, kindly share this to all and do like this video.